We are revising relations and functions to A. Question number 10. Question number 10 says let A cross B is equal to A comma B and B is equal to 3A minus 2. So the first element is A, the second element is B. You know, the first set contains some elements called A, okay, small a, and the second set contains elements called small b. Fine. And the relation is from A to B. That is evident. And what is the relation? B is equal to, जोर से बोलो, 3A minus 2. So B is equal to 3A minus 2. If B is equal to 3A minus 2, and it is saying that x and minus 5, it's saying x and minus 5 and 2 and y belong to this. So therefore, these must satisfy this relation. The first number is A, because it is given the relation is from A to B, A comma B, right? So therefore, x कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा. -5 कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा. So -5 is equal to 3x minus 2, correct? -5 plus 2 is -3. So x is equal to -1. ये आंसर आ गया. Yes. Sit quickly. Sit quickly. Okay. And the second यहाँ पे 2 कहाँ जाएगा? A, yes. So 3 2 is 6. 6 minus 2, 4. So y is equal to 4. ये 4 है और x equal to -1 है. ठीक है? I think they must be asking x and y. They're asking x and y. Fine, done. Okay. So this is okay. So that is 2a. Okay. And I'm going to revise some 2a for you. In 2a, some the type of questions which come are start writing quickly. That find the values of a and b if a plus 3 comma b minus 2. A plus 3 comma b minus 2 is equal to 5 comma 1. So it is very simple that whatever is before the comma, it is ordered pair. So they are in order. So this, it has to be the first one. This is equal to 5 and this is 1. So you solve them, you'll get. Okay. And Cartesian product from A to B. Yeah. So page number 56 of R.S. Agrawal. Okay. And let's say what is A cross B? If you have a set called 1, 2, 3 and a set B called x comma y, then A cross B is from A to B and A ऐसा है, B ऐसा है. What is A cross B? A cross B is all elements which are, so you have to ordered pair from A to B. So A cross B is a set. So let's say 1 comma x, 1 comma y, 1 comma y, फिर क्या आएगा 2 comma x, फिर क्या आएगा 2 comma y, and then you have 3 comma x and 3 comma y. So this is the full set containing A cross B. This is called Cartesian product. A cross B, Cartesian product. Okay. And what is relation? Relation is any subset of this, any subset of this whole A cross B. So let's say you only take, you know, take a subset which contains this and this, and this. You can have a subset which contains this and this. So that relation will be R1 is equal to, relation is 1 comma x और क्या है 2 comma x or 2 comma y. How will you show that relation? To show that relation in this form, in box form. Yeah, so first of all A में जो भी है वो बनाओ. A में क्या क्या है 1 है, 2 है और 3 है. B में क्या क्या है x है और y है. अब जो जो कनेक्टेड है वो कनेक्ट कर दो. 1 से क्या कनेक्टेड है, x कनेक्टेड है, 1 से x कनेक्ट कर दिया. 2 से क्या कनेक्टेड है, x कनेक्टेड है, x कनेक्ट कर दिया. और 2 से क्या कनेक्टेड है और y कनेक्टेड है. तो ये 2 से y, दिस इज द रिलेशन. ओके. इसको इस फॉर्म का नाम होता है कुछ पता नहीं, भूल गया, बॉक्स फॉर्म और
नहीं नहीं नहीं, वो फंक्शन है, रिलेशन में कुछ भी चलेगा, कुछ भी किसी से भी जुड़ा है, रिलेशन में देयर इज नो रूल, ठीक है। नहीं नहीं, दिस इज नॉट अलाउड इन फंक्शन, यू कांट स्टार्ट, हाँ इट कैन गो, इट कैन लैंड एट द सेम पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज योर and now let's say you have some question like question number 11, for example, for example बोल रहा है na, suppose n of a मतलब set a has 3 elements, set b has 2 elements, then what is the element in n a cross b, number of elements in a cross b, it is very obviously 6, okay. If na is 4 and nb is 5, then what is n of a cross b? If na is 4 and nb is 5, n of a cross b is 20, ठीक है। Okay, 2b I'm not doing, 2b I will try one, okay. For example, in 2a 11th, 2a 11th, find out if उसमें बोला है कि a comma 0, b comma 1 and c comma 0 are in a cross b, then find a b. So उसमें पहले एलिमेंट वाला, पहले वाला जैसे a है, b है और c है, they are in a, and c and the b has 0 and 1, okay. Okay, 2b which one? Sixth one. So 2b is of proving using 2b fifth, if a cross b belongs is a subset of c cross d and a cross b is phi, prove that, sorry, is not equal to phi, okay. A cross b is a subset of c cross d and a cross b is not phi, a cross b is not equal to phi, prove that a is a subset of c, a is a subset of c and b is a subset of d. अच्छा, लेट्स से a क्रॉस b में एक एलिमेंट है, लेट्स से एक एलिमेंट है x, y, ठीक है। एक a क्रॉस b में एक एलिमेंट है x, y, सो so let x, y is an element which belongs to, element को क्या लेते हैं, belong is an belongs to, right, belongs to a cross b, ठीक है, fine. If x is, it's an element in a cross b and a cross b is a subset of c cross d, not, I not forgot, I think it means equality also. When you don't have this line, it means that it is a proper, मतलब वो फिर full नहीं हो सकता, मतलब जैसे कि a, जैसे सपोज a सेट है, a है 1 2 3, ठीक है, इसका एक सेट सबसेट a भी है ना, a itself 1 2 3, तो वो नहीं हो सकता, फुल नहीं हो सकता, उसके अलावा जितने छोटे वाले हैं सारे, हाँ 5 1 2 3 1 2 और 2 3 और 1 3, ये सब जब होते हैं तो ये लगता है, बिना इसके लगता है। इफ लाइन इज ऑल्सो देयर दैट मीन्स वो भी है, वो बड़ा वाला भी है, सारे हैं, मतलब 8 सबसेट्स हैं, ऑल सबसेट्स, अगर ये लगा तो 7 सबसेट्स, ठीक है, बट इसमें पूरा हो सकता है, इक्वल इक्वल, सॉरी विद द लाइन इज इक्वल, मतलब 8 फुल, लाइन मतलब फुल, ठीक, ओके। नाउ इफ x, y is an element, right, we say let x, y belong to a cross b, right, yes. If we say let x, y belongs to a cross b, then x is a subset of, x belongs to a and y belongs to b, yes, क्योंकि x, y is belongs to a cross b, a cross b कैसे आता है, a cross b ऐसे ही आता है ना, a और b, और अगर उसमें तो कहीं ना कहीं a में x should be there, right, and b में y should be there, out of many elements a x should be at least one of them,
and in B y should be at least one of them. Now they are further saying that A cross B is a subset of C cross D. That means if A cross B is a subset of C cross D, that means every element which is in A cross B is there in C cross D. Therefore, if is x comma y an element in A cross B, right? So every element in, yes, A cross B must belong to C cross D, right? And we just said that x comma y belongs to A cross B, so x comma y belongs to C cross D also. Therefore, this implies, right? Therefore, agar x comma y belongs to C cross D, then therefore x belongs to C and x belongs to D. Sorry, y belongs to D. Yes. ठीक. Now x belongs to A and x belongs to C. पर ये कैसे मिलेगा कि A is a subset of C? हाँ, फिर से बोलो. A cross B is a subset of C cross D. Then there are many others in C cross D apart from x comma y, but there is x comma y. There are many elements. So for example, A में है x1, x2, x3 और एक x. ठीक है, A में है, और y में है y, y1, y2, y3. ठीक. C में एटलीस्ट ये तो होना चाहिए, ये होना चाहिए एटलीस्ट, राइट? जो भी A क्रॉस B है वो सबसेट ऑफ C क्रॉस D है, तो C में ये तो चार होना ही है. ये सर नो? हाँ हाँ, पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर ही है, ऑर्डर्ड पेयर ही है. मतलब C में इसके अलावा x प्राइम, x डबल प्राइम ये भी हो सकता है. एंड मैं आ रहा हूँ, रुको रुको. y, y1, y2, y3, y डबल प्राइम, y प्राइम, ये सब है C क्रॉस D में. हाँ, A इज व्हाट? A इज स्टिल B. हाँ, तो देखो A क्रॉस B क्या क्या होगा? A क्रॉस B क्या होगा? देखो यहाँ पे x y होगा, है ना? x y1 होगा, समझ में आ रहा है? x y2 होगा, x y3, ऐसे ही सिमिलरली x1 y, यस और नो? x1 y1, x1 y2, समझ में आ रहा है? ये फिर क्या है लास्ट वाला? x3 y, x3 y1, x3 y2 and x3 y3, right? So this is A cross B. Every element of this, इसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर है, ये C क्रॉस D में होना चाहिए. C क्रॉस D देखते हैं क्या है. C क्रॉस D देखो क्या है? x प्राइम y डबल प्राइम, x प्राइम y डैश, x प्राइम y1, x प्राइम y2. अंडरस्टूड? सो जैसे पहली लाइन में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, राइट? ऑर्डर्ड पेयर. तो ऑर्डर्ड पेयर इज बिलोंगिंग, राइट? इसमें 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, सेकंड में भी 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं. ऐसे टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इसमें? कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं यार? ये कितने हैं? ये कितने हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हैं? 36 ordered pairs. Okay, so there are 36 ordered pairs. Now these are how many? 16. Yes. Are these 16 ordered pairs contained in this 36 ordered pairs? That is what the meaning of A cross B is a subset of C cross D means. Understood? Will they be? अच्छा, एक चीज में हमने गलत किया. एवरी एलिमेंट, देखो ये है, एवरी एलिमेंट इन A cross B must belong to C cross D. ये इंपॉर्टेंट है, एवरी. Therefore every element of, यहां पे ये लिखा ना, every element of A, इसमें देखो A में जो भी आ रहा है वो यहां C में है कि नहीं? so every element of A, यहां पे लिखा था x belongs to C. तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट है कि every x belongs to A. यहां पे भी इंपॉर्टेंट है, फॉर, यहां पे सिंबल बनाना है फॉर एवरी का सिंबल ऐसे होता है V और फिर ऐसे काट देते हैं. सो पहले मैंने लिखा था x belongs to A, नहीं, every x belongs to A, every x belongs to C. मतलब यहां पे अगर x A में है वो C में भी है, then only you can say that A is a subset of C.
जस्ट बाय सेइंग, अगर सिर्फ तुम एक मिनट, अगर तुम सिर्फ एक बोलोगे कि एक एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, वन एक्स, सपोज यहाँ पे एक एक्स हो और वो ए में बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू सी भी कर रहा है, सो इफ यू जस्ट राइट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, you can't conclude, it does not imply that a is a subset of c, right? तुमको लिखना पड़ेगा for every x belongs to a, यहाँ पे every तभी तो ऐसा भी तो हो सकता है एक x अगर a में है और c में है, ट्रू है, लेकिन बाकी तो नहीं, ये सबसेट नहीं है ना a c का, इसमें नहीं है सबसेट। यस, फॉर एंटायर a to lie in the c you should write for every x belongs to a that x belongs to c, और तुम्हें यहाँ पर every लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। yes, all elements belong, every x belongs to a, x, those x should belong to c, then you can say that a is a subset of c. Understood? Sorry, c has more elements, no? मतलब at least more elements. yes yes, इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें नहीं आएगा, इसमें every will not come, इसमें every will not come. ओके, किसमें किसमें ये इसमें नहीं, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a दैट x मस्ट बिलोंग टू c, बट ऐसे जरूरी नहीं है कि इसमें, ऐसा नहीं है ना फॉर एवरी x बिलोंग्स टू c इट बिलोंग्स टू a, ऐसा देखो, अगर सबसेट पहले समझो कि a ऐसे अंदर है और c बाहर है, ये है सबसेट, प्रॉपर सबसेट, मतलब बराबर भी हो सकता है, ये सर्कल बड़ा होके बराबर भी हो सकता है, but there are some elements in C which does not belong to A, so therefore you can't write for every C belongs to A it belongs to A, you should write for every X belongs to A it belongs to C. यहाँ पे शायद इंक्लूड हुआ ना ये X belongs to A, so ठीक है, अच्छा जरा इसके सबसेट्स बोलो, क्या क्या है, बोलो जल्दी, सबसेट्स बोलो, हाँ बोलो, कैसे, ठीक से बोलो, 1 then 2 then 3, फिर अभी और है, हाँ या इसी से, यस, एक और है, दो और है, ये हाउ मेनी यू हैव टेकन, हाउ मेनी हैव यू टेकन इन दिस, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव यू टेकन इन दिस, one element, right? How many elements have you taken in? 2, so यहाँ 1 2 3 and one more is there, 1 से पहले क्या आता है, null set, so there is a null set, 1 2 3 4 5 6 7 8, these many are, when you write these they are like only this okay, these many are proper subsets and these many are subsets, ठीक है, फाइन, हटा दूं, लिख दिया, ठीक है, टू बी, now you have functions, function में any relation, all relations are not functions, some relations are functions, they should follow what, two rules, right? First rule is left side में nothing should be empty, right? ये rule है ना, left side में nothing should be empty, and यही है ना relations, अबे function नहीं कह रहा, function is 2c, अबे function is 2c, no, क्या, अच्छा, टू बी नथिंग, टू सी इज रिलेशन, राइट, हाँ ठीक है, तो टू सी का रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा रिलेशन कर लेते हैं, फंक्शन फिर 2D होगा ना,
नहीं है? अच्छा, थर्ड चैप्टर ही अलग है, ठीक है। सो 2C रिलेशन में whatever is connected on the left side, connected left is called what? Huh? Domain. Connected left is called domain. All right is called codomain, correct? Codomain. And connected right is called range. Write this. So let's say you have a relation from A, B. A is 1, 2, 3, and B is x comma y. Okay. Now you have, so what is my domain? 1, 2. Domain is 1, 2. What is codomain? What is range? X, Y. Clear? Write this. Yes. It comes in range only if it is connected. X, if there were X, Y, Z, then it would come in codomain but not in range. छोड़ दो, बाकी सब तो है ना? हाँ, इधर इधर आना। हाँ, किया था। इसमें कुछ बना नहीं सकते जो। Yeah. So understood. Write one more. Write one more. I told you that there are no rules in connecting a relation, right? Write this. Is this a relation? Yes, it is. Likho. It is empty relation. Nothing is connected. If I said no rules, that means no rules. Why are you imposing your own rules? Empty relation. Empty relation. What is the domain? Nothing क्या होता है? Phi. Phi or empty set. Yes. Domain. This is domain. What is codomain? X, Y, Z. What is range? Empty. Yes. Phi. Right. This is called empty relations. How many empty relations are possible from A to B in general? How many empty relations are possible? Answer is one. Only one. This one. Okay. We will count. We'll try to find how many. Oh, that is difficult. But the total number of relation is 2 raised to mn. लिख लो. The total number of relation is 2 raised to mn. m क्या है? m क्या होता है? बता दो. इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स और n इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितना होगा? 2 रेस टू कितना होगा? हाँ, 6. अबे mn 9 ना, 3 into 3, तो 2 रेस टू 9 नंबर ऑफ रिलेशन होंगे. तो 9 एक बहुत बड़ा नंबर होता है. Okay. So if you have a set which has A has 2 and B has 2, how many relations would they have? 2 to the power 4 कितना होता है? 16. जरा बनाओ जल्दी. कौन कौन से रिलेशन है? So 2 raised to this will have, ये बनाओ A B. A is 1 to B is xy. A is 1 to B is xy. So how many relations will they have? 2 raised to
4, 2 raised to 4 is 16. So one relation is empty relation. पहला relation empty relation मतलब कुछ भी connect नहीं है, nothing is connected. Just 1 2 लिखो, xy लिखो, but don't connect anything. Empty relation. Okay. Second relation, so this is R1. Then you have R2. You have now you have, let's say, one is connect, one arrow. You have, इसमें कितने arrows थे? 0 arrows. अब क्या करेंगे? वन एरो वाले कितने तरीके से वन एरो हो सकता है? 1 2 3 and 4. So one of them would look like this: 1 2 xy, let's say 2 x. So ऐसे कितने रिलेशन है? R1, sorry, R2, R3, R4 and R5. Understood? Everyone has understood? I have made one of them. Sorry, you can write ordered paired also, but I want you to draw arrows. So answer is no. मैं एक डायग्राम बना लो, वैसे भी 4 नहीं बना रहा हूं ना, इतना आलस मत किया करो, ठीक है? 16 of this, but these, ये वाले एक, ये 4 एक ही है ना, मतलब I have drawn one of them, but you can also draw one of them, but you understand that one of them is 2x, one of them is 2y, one of them is 1x, and one of them is 1y, right? ठीक. Then these are how many arrows? One arrow. Now we'll come to two arrows. Now two arrows, ध्यान से देखो, बताओ 1 2 xy. पहला एरो 1 से, अब टू एरोज में देखो नंबर ऑफ केसेस हैं. हो सकता है दोनों एरो किससे निकले? 1 से निकले. हो सकता है दोनों एरो किससे निकले? 2 से निकले. और हो सकता है एक वन एरो फ्रॉम 1, वन एरो फ्रॉम 2. सो इफ बोथ एरोज स्टार्ट फ्रॉम 1, हाउ मेनी रिलेशंस? सोचो कैसे 2? भाई दोनों एरो 1 से निकल रहे हैं, बोथ 1x एंड 1y. ये कितने रिलेशन है? एक ही तो रिलेशन है. अरे ये तो एक ही रिलेशन है. नहीं समझ में आ रहा? देखो, इसलिए बोलो बनाओ, तो बनाओगे ना तब समझ में आएगा. 1 2 xy, 2 से दोनों एरो निकल रहे हैं. ये 1 से दोनों एरो निकल रहे हैं, ये 2 से दोनों एरो निकल रहे हैं. यस. एंड 1 2 xy, सो एक एरो से, एक एरो से. तो हाउ मेनी? 1 सेकेंड, बस इतना ही है ना, 3 ही तो है. देयर शुड बी 2 एरोज, राइट? एंड और कोई तरीका है क्या इसमें करने का? लेकिन नहीं, नहीं हो सकता है ना 1. नहीं नहीं नहीं, इसके और केसेस है ना, इसके और केस है इसमें. करेक्ट 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 करेक्ट, इसमें और है. 1 2 xy, 1 x पे जा रहा है और 2 भी x पे जा रहा है. यस. और इसमें एक हाँ यस, एक और है जिसमें 1 y पे जा रहा है. करेक्ट, बोथ आर गोइंग एट y. अब और कुछ है 2 में? 2 to x and 1 to y. अच्छा, उल्टा भी है. यस करेक्ट, वेरी गुड. नहीं, 3 4. ये समझ में आया? 2 एरोस का कितना केस है? 1 6 केस है. हाँ 6 केस आया. समझ में आया? R5 तक था, तो R6 R7 R8 R9 R10 R, कितने बचे हैं? 5 बचे हैं. यस वेरी गुड. ये इतना समझ में आ गया? ये सब सही है. 1x 2y, 1x 1y और 2x 2y बराबर क्रिस क्रॉस हो गया. और ऐसा ऐसा, हाँ बस इतना ही है. सही है क्या? ये तो 6 है ना, मुझे तो काउंट करना आता है. 1 2 3 4 5 6. ये तुम ऐसे काउंट करती हो क्या? हाथ हाथ उंगली खत्म तो काउंटिंग खत्म. अरे 5 लेफ्ट है, हाँ पता है, अभी आएंगे, अभी आएंगे. 5 are left. Yes yes. Oh, you are saying 5 are left. Yes, 5 are left. 5 are left. So how many arrows? यहाँ कितने थे? 0. यहाँ कितने हैं? 1. ये सब कितने arrows? 2. अभी कौन सा arrow आएगा? 3 arrows आएगा. 3 arrows is very easy. 3 arrows is very easy because देखो, एक बात देखो, उसमें ना तुमको ज्यादा कंफ्यूज होने नहीं है, because you can think like that. How many? 4 arrows का कितना है पहले वो सोचो. 4 arrows का कितना है? All 4, right? All 4 possible. Yes or no? इसका मतलब 3 arrows means which one of them is left? If you make 3 arrows, you are essentially leaving 1 arrow, right? So how many ways can you leave 1 arrow?
देयर आर 4 एरोज, इन हाउ मेनी वेज कैन यू लीव वन एरो? 4 वेज। तो वो एक ये हो गया 4 एरोज वाला, और 4 हो गए कौन से? 3 एरोज वाले। अंडरस्टूड? तो ये हो गया तुम्हारा R16 इसको बोलूंगा मैं, बिकॉज इसमें 4 नंबर ऑफ एरोज हैं। और देन 3 वाला तुम बना, यू मेक इट योर ओन सेल्फ। व्हाट इज 3 एरोज? 3 एरोज, 3 एरोज मींस व्हिच वन आर यू लीविंग? सो लेट्स से R12 एक है जिसमें 1x है, 2x है और 1y है। 2y is not connected, so I am not connecting 2y in one of them. R12. R13 might be I may not be connecting 2x. R14 I will not be connecting 1y, and R15 I will not be connecting 1x. Understood? R16 is this. All 4 are connected. Understood? इसमें क्वेश्चन लिखो, तो जब बना लेना तो बता देना, हाथ खड़े कर देना, मैं समझ जाऊंगा तुमने कर लिया है। ठीक है, 2 ने कर लिया। एंड राइट लॉजिक, ओके? ड्राइंग मतलब राइटिंग लॉजिक इज मोर इंपॉर्टेंट की we are connecting 0 arrows, we are connecting 1 arrow, we are connecting 2 arrows, 3 arrows and 4 arrows. Now draw this one, like A 1 2 3 and B X Y, don't make any arrows. Okay, 1 2 3 and X Y ये बना लो, 1 2 3 X Y, new question, and then you write how many empty relations are possible. क्या आंसर है? How many empty relation? Empty relation means nothing is connected. 1. Answer is 1. ठीक है? What is the maximum number of possible arrows? Maximum number of arrows. कितना है? टोटल रिलेशंस नहीं पूछा मैंने, पूछा एक इनर, मतलब लाइक हाउ मेनी मैक्सिमम एरोज बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं? देखो मैक्सिमम एरोज है 6। नए पेज में बना ले, ठीक है चलो। मैक्सिमम नंबर ऑफ एरोज कितना? 6। फिर देखो इन हाउ मेनी रिलेशंस 6 एरोज आर देयर? इन हाउ मेनी रिलेशंस 6 एरोज आर देयर? 1. आंसर इज 1. लिखो। अंडरस्टूड? In how many relations all 6 arrows are there? 1 relation. In how many relations all 4 arrows are there? 1. So similarly, in how many relations all 6 arrows are there? इसका आंसर कितना है? 1. In how many relations 5 arrows are there? Idiots. How many total arrows are there? Making 5 arrows means leaving one of them. So how many relations? 5 क्यों बोल रहे हो? 6. You are making 5 arrows in each of them. Let's say you have 1x, 1y, 2x, 2y, 3x, 3y. Out of these 6 arrows, if you have to, this is one relation, right? If you have to make a relation of 5 arrows, you have to delete one of those arrows. Now you can delete either this arrow or this arrow or this arrow or this arrow or this arrow. How many arrows can you delete? So how many 5 arrow relations? 6. देखो, how many 5 arrow relations? 6. You should understand this question which I asked, how many 5 arrow relations? इसका आंसर 6 है। जब तुम इसको सेट फॉर्म में लिखते हो, इन द सेट फॉर्म में से रिलेशन को लिखोगे, सो सपोज एक उसमें से एक रिलेशन आएगा जिसमें 5 एलिमेंट्स होंगे ना, एक एक एरो बोलो जो डिलीट करना है। 3 2 y डिलीट कर दिया अगर, तो ये जो रिलेशन बना है, 5 एरो का रिलेशन बना है, उसको सेट फॉर्म में लिखोगे 1x 1y 2x 2y
and 3x, right? So in a set form, the question is same as in how many of these relations there are 5 ordered pairs, 5 elements. Understood? Write the same question again. In how many of these relations there are 5 ordered pairs? How many relation contains 5 elements, right? तो उसका आंसर कितना है? 6. ठीक है? Okay, 1x, 1y, 2x, 2y, 3x, 3x. ठीक, okay. In how many of these relations there is one arrow? 6. Good. देखो, how many of the relations have one arrow? The answer is 6. ठीक है ना? ये तो easy है. In how many of this relation there is 2 arrows? इसका जो आंसर है ये इसका आंसर थोड़ा काउंट करना पड़ेगा. 4 नहीं है, 15 है. ठीक है? ये कैसे आता है? 15 है, थोड़ा लंबा है. क्यों? देखो लंबा है. वैसे मैं तुम्हें 15 काउंट करके बता देता हूँ, बट ये जो फॉर्मूला है दिस यू विल रीड इन देयर इज चैप्टर कॉल्ड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस. देयर यू विल रीड. ओके? तो do any one of you follow IPL? How many teams were there? 11. 10 or 11? 10. How many matches were played in the group stages? 70. 90 प्ले हुए. तो फिर 9 टीम्स, कितनी टीम्स थी? सही बताओ. 10 टीम्स थी. और सबने आपस में 2-2 मैच खेले ना, एक इनके होम पे एक इनके होम पे, है ना? 10 से 2 कितना होता है? 10 into 9/2 45 40 90 मैचेस हुए हैं, होने चाहिए. पक्का? इंक्लूडिंग द फाइनल तो पक्का 10 टीम्स थी. जरा देखो. Who? Oh no, why not everyone played 2 matches? Why? अच्छा, एलिमिनेशन तो ऐसा नहीं हुआ कि अरे भाई एक बात बता, अगर मैं एक रैंडम टीम उठाऊं जो भले ही फाइनल में गई या नहीं गई लेकिन वो खेली थी, तो उसने 2 मैच खेलेंगे नहीं एटलीस्ट विद एवरी टीम उसने, मतलब उसने एवरी टीम के साथ 2 मैच खेले हैं ना. सीएसके ने हैदराबाद के साथ 2 मैच खेले हैं पक्का. ऐसा पक्का हुआ है. तो 90 मैच तो हुए ही हुए हैं. कुछ भी कर लो, देख लो जरा. हाँ, फिर से 10 into 9/2. देर वो देखो नंबर ऑफ टीम्स इन आईपीएल 2024 10 ही है कि 8 है? पक्का देखो. हाँ, कितने? 10 है. और वो देखो मैचेस. हाँ भाई, ये बोल रही है कि मुंबई एंड गुजरात ओनली प्लेड 1 मैच. व्हाई इज दैट सो? क्यों? व्हाई? अच्छा, तुम एक काम करो, तुम ये मतलब इसका मतलब इसमें 2 मैचेस नहीं हो रहे हैं. तुम वो देख लो, कोई भी ईपीएल देख लो. इंग्लिश प्रीमियर लीग होती है ना, फुटबॉल वाली. फुटबॉल लीग कोई भी देख लो. इंग्लिश प्रीमियर लीग देख लो, कितना है, कितने मैचेस हैं? ईपीएल सर्च करो. 20 टीम्स तो 20 into 19/2 190 मैचेस होंगे. फिर क्या फॉर्मूला है? मतलब ये 6C2 कैसे आया फॉर्मूला? तो ईपीएल में 190 मैचेस होंगे फिर, अगर 20 टीम्स है तो. तुम्हें अगर तुमको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लो, n into n-1/2 होता है फॉर्मूला. ठीक. अभी जैसे सपोज तुमको यहाँ पे ना 6 एरोज थे ना, तो 6 एरोज है ना, 6 में से कितने बनाने हैं? 2 बनाने हैं ना. 2 2 2 2. तो ऐसे समझो 1 2 3 4 5 दीज आर द एरो नंबर्स. ओके, नंबर 1 एरो, नंबर 2 एरो. तो पहला ये वाला उठाया, दूसरा कौन सा उठा सकते हैं? ये और ये. कितने ऑप्शंस हैं? 5. अगर पहले 2 उठाया, अब कितने ऑप्शंस हैं? 5 नहीं, ये तो ऑलरेडी हो चुका है ना. कितने ऑप्शंस हैं?
4, दूसरा अगर ऐसे 3 उठाया तो अब कितने 3, ये उठाया तो कितने ऑप्शन है 2, ये उठाया तो कितने 1, इसका सम कितना है 15। ठीक है, सेम थिंग है, अगर देयर आर 6 टीम्स, सबको आपस में खेलना है, राइट, सबको आपस में खेलना है, तो 1 विल प्ले विद 2 3 4 5 6, कितने मैचेस हो गए 5, 2 विल प्ले विद, इसके साथ नहीं खेलेगा, एक ही एक मैच खेल रहे हैं, 2 मैच नहीं खेल रहे, तो कितना होगा 15, एंड इफ दे आर प्लेइंग ट्वाइस सो इनटू 2, 15 इंटू 2 30। ठीक है, ऐसे ही तुम अगर मतलब पता नहीं आईपीएल में शायद वो बोल रही है कि एक ही एक मैच खेला इसलिए 90 से कम है। हाँ, क्योंकि आरसीबी का मैच बिकता है ना, बट किसका नहीं बिकता, किस जीटी गुजरात, हाँ उसका नहीं बिकता, तो क्यों खिलाना 2 मैच। ठीक है, ठीक, so we will do you, okay, relation a is, let's say we are doing question number 3 of exercise 2c, okay, 3 2c का 3, read, a is equal to 1357, b is what 2468, and it is given that r is equal to x comma y, relation is x comma y such that x belongs to a, y belongs to b, or relation condition what they are satisfying, x greater than y, x must be greater than y, क्या ग्रेटर देन y तो लिखा है, 3 पढ़ रहा हूं मैं, 3 पढ़ रहा हूं, ठीक है, सो जैसे x ग्रेटर देन y, तो अगर a में 1 डाला तो कुछ नहीं आएगा, बिकॉज 1 यहां से उठाना है, द सेकंड नंबर यू हैव टू पिक फ्रॉम हियर, यहाँ पे एक भी नंबर नहीं आएगा, बिकॉज ऑल नंबर्स आर ग्रेटर देन 1 हियर, सो 1 कांट बी ग्रेटर देन एनी अदर नंबर, सो 1 नहीं आ सकता, ठीक, 3 आ सकता है, यस, 3 के साथ यहाँ पे क्या आएगा 2, so 3 comma 2, 3 is greater than 2, no other than 3, 5 के साथ क्या आएगा 5 2 and 5 4, बस यही है, 7 के साथ क्या आएगा 7 2 4 7, दिस इज आई थिंक योर रोस्टर फॉर्म है, ये यही है रोस्टर फॉर्म, हाँ, उसने बोला है रोस्टर फॉर्म में लिखना है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, डोमेन भैया कितना है, कितना है डोमेन 3 5 and 7, very good, because 1 is not connected, 1 is not there, and range कितना है 2 और 4 और नया आया 6, yes 2 4 and 6, रेंज हो गया। और क्या पूछा उसने, डिपिक्ट आर बाय एरो डायग्राम, बना लो एरो डायग्राम, ए बी, अबिता यहाँ लिखूं 1357 कि नहीं लिखूं, ईमान नहीं लिखूं, 1 I should write or not, but 1 is not there, no, good good, we have to write 1, ठीक, and we have to write 2 4 6 8, okay, now 3 से क्या कनेक्टेड है 2, 5 से 2, 5 to 4, 5 to 4, 7 to 4, 7 to 6, ठीक, 7 to 2 ऑल्सो, हाँ कर दिया, ठीक है, इतना गंदा मत बनाना, ठीक है, अंडरस्टूड, एंड राइट ए एंड बी ऑल्सो, अदरवाइज हाफ मार्क कट जाएगा, ठीक है, डिपिक्ट एरो डायग्राम भी हो गया, और कोई यू गाइस ट्राई, डू यू नो व्हाट इज रिलेटिवली प्राइम, they don't have any 1, yes, so let 2 and 3 are relatively prime, 2 and 7 are also relatively prime because they don't have any common factor, but 2 and 8 are not relatively prime because 2 and 8 का common factor क्या है 2, 10 and 11 are relatively prime, yes, are any two consecutive numbers relatively prime, consecutive numbers, yes, yeah, right, this is the theorem, any two numbers are consecutively prime,
Please do fifth. Sorry. Fifth domain is 2 3. 2 3 4 5. Someone said that they had to record, but everyone is here. Who said? Ah, Isha said. Domain is 2 3. Two of every number 2 3 4 5, and the range everything in B. Okay. Okay. Have you joined 4 and 10? Have you joined 4 and 10? No. Why? 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 Which? Why don't you give me the complete answer at one go? हाँ जी ठीक. 12th is good. 12th also do. 12th. Same. 5 2C. 2C. भाई Z कैपिटल है ना, और कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? रिलेशन फंक्शन. तो क्या है? इंटीजर है. ये सब डाउट नहीं करना इसमें. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं है, पेपर में पूछने लग गए कॉम्प्लेक्स नंबर. Z इज इंटीजर. इंटीजर ऐसे याद कर लो. इंटीजर ही बोला करो तुम. ठीक है. x square plus 5 square is less than equal to 4. xy belongs to integer. और is it satisfying? 0 plus 0 is less than equal to 4. तो है कि नहीं? 0,1 है क्या? और 1,0 है क्या? 0,-1 है क्या? 0, सॉरी -1,0. ये 4 तो हो गए. -1, वेरी गुड. ठीक है. 2,0, 0,2, -2,0, 0, -2. सही है. और कुछ √3,0. which one of them? √3. ठीक है. √3 is not integer, unfortunately. Okay, so domain of R. Sorry. Correct. Domain is 0, 1, -1, 2, -2. Range same. Codomain. Codomain is
Codomain is all integers, right? Codomain is all integers Z. Done. Okay. Then do you have inverse relation in your syllabus? Inverse है क्या? पता नहीं inverse. अच्छा, inverse is very simple. If x to y it is r1, then the inverse of r1 is y to x. Okay. Sorry. If you know, if ऐसे जा रहा है ना, जैसे जैसे यहाँ पे 1 से 3 से क्या कनेक्टेड था? 2 ना. तो रिलेशन r इज ये रिलेशन है ना. अगर मैं इनवर्स बोलूंगा तो ठीक इसके उल्टे कर लिख देने हैं. मतलब फॉर एग्जांपल इनवर्स ऑफ r विल बी 2,3, 2,5, 2,7. So you will draw b to the left, a will be to the right. Sorry, कंडीशन तो चेंज हो जाएगी ना. चेंज हो जाएगी क्या? कंडीशन विल नॉट चेंज. यस, कंडीशन आई थिंक विल चेंज. नो, थोड़ा चेंज हो जाएगा. आई थिंक एच हो जाएगा. ये x की जगह y और y की जगह x हो जाएगा. हाँ, switch the x and y. Simply in this you can switch x and y, and here what you do, b को left side बनाओ, a को right side बनाओ, and make the arrows. Understood? Yes. ठीक है. Okay. Now you have reflexive, symmetric, and transitive relations. So reflexive means if, and these are always defined on a cross a. Okay, a cross a means same. They should not be different. They should be same. The left and right should be same. And right. Okay, 2D लिखो. 2D बताता हूँ. 2D का कौन सा लिखो? ये बाइनरी रिलेशन क्या होता है? बाइनरी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस होगा. बाइनरी नहीं, देयर इज नथिंग. मतलब वही है, सेम है. बाइनरी रिलेशन और रिलेशन है सेम है. ठीक है, सेम. ओके. क्वेश्चन जो 2D है, एक्सरसाइज 2D, एक्सरसाइज 2D जो लिखी है ना, उसका पहले तो फोर्थ क्वेश्चन करो. फोर्थ क्वेश्चन है r is a comma b, a comma b belongs to whole numbers. Whole numbers start from 0, 0, 1, 2. Okay, and so on. And 3a plus 2b is 15. पहले तो relation r लिखो, both in the set form and in the arrow form. Sorry, what? दोनों दोनों बताता हूँ. होल नंबर मतलब ऐसे होगा, a 0, 1, 2, 3, 4, 5, so on. 0, 1, 2, 3, 4, 5, so on. Okay, and a is on the first, b is on the first, second, then 3a plus 2b होल नंबर है. तो पहला जैसे आएगा, a में 5 and b is 0. 5, 0 is connected. और है 1. जैसे a 1 है तो b is 6 है ना. a 1 है तो b is 6. Yes. If you put a is equal to 1, b is equal to 6. Understood? If you put a equal to 0, you will get 7.5, which is not a whole number. So 0 is not, a 0 is not there. Okay. Then 3, 3 भी है. Correct. 3, 3 are 9 plus. एक मिनट, इसको ए ऐसे वैसे करो ना, मतलब इन ऑर्डर करो. तो ए को डाला 1. अच्छा ठीक है, a 1 डाला तो b आ गया 6. a 2 डालने से
आएगा, आएगा, 8 2 3 2 6 50 नहीं आएगा बिकॉज इट्स नॉट डिविजिबल बाई 2। सो 8 2 डालने से नहीं आएगा। आएंगे आएंगे उस पर आएंगे, रुको पहले आर लिखो। ए को 3 डालने से कितना आएगा? 3,3। ए को 3 डालने से 3 आ रहा है। ए को 4 डालने से कुछ नहीं आ रहा ना। एंड ए को 5 डालने से, ए को 5 डालने से बी 0 तो आ रहा है, लेकिन वो लिख दिया था ना। सो देयर आर ओनली 3 एरोज। यस, व्हाट इज द डोमेन? ओके, कोडोमेन, कोडोमेन, all whole numbers on the right side, all whole numbers 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, what is the range? 0 3 and 6। ठीक है, करेक्ट। now what is r inverse? r to the power minus 1 उल्टा है इसका। r to the power minus 1 क्या है? तो लेफ्ट साइड में क्या बनाना पड़ेगा? ये राइट, ये वाला। तो लेफ्ट साइड में 0 1 2 3 4 से 0 कनेक्टेड है और 0 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे 0 किससे जा रहा है? 5 से आ रहा है। 0 किससे जा रहा है? 5 से, 5 से कनेक्टेड है। ठीक है, 0। यस, आ रहा 3ab प्लस 2a। एंड यहाँ पे 3 किससे कनेक्टेड था? 3 से, so 3 विल बी स्टिल बी कनेक्टेड टू 3। ठीक है, एंड यहाँ पे 6 कनेक्टेड 1 से, तो 6 किससे कनेक्टेड होगा? 1 से। ठीक है बच्चों, ये है आर इनवर्स। आर इनवर्स का डोमेन क्या है? 0 3 6। रेंज क्या है? Yes, it's 1 3 5। ठीक है, do you have you realized that the domain of R is same as range of R inverse, and the domain of R inverse is same as range of R? ठीक है, that is what they have to show in the question. Okay, now is you have equivalence relation, मतलब there is reflexivity, symmetry and transitive. Reflexive, symmetric and transitive. Reflexive means the similar element will be there. For example, if you see question number 5, question number 6, try to write the relation of question number 6. Question number 6 का relation है a comma b, and a comma b belongs to integer such that a minus b is even. First, what are the some elements in the first relation, first set? They are z and integer है तो -3 -2 -1 0 1 2 3, all these, okay, all integers. Second set also is all integers, and a minus b is even. So for example, write some elements. By the way, 0 is also an even number. 0 is even, 2 is even, 4 is even. So will 1 comma 1 come? Yes. 0 comma 0. Yes. 5 comma 5. But 5 is odd. Very good. 5 minus 5 is 0, which is even. Okay. Will 1 comma 3 come? Because 1 minus 3 is -2, which is even. Will 3 comma 1 come? Yes. 1 comma 5 will come. Yes. 1 comma 4 will come. No. So any two consecutive numbers, bro, one मतलब one space consecutive मतलब alternate, क्या बोलूंगा उसको मैं, like any numbers which are differing by 2 will come, or 4 will also come, but any two numbers whose difference is an odd will not come, right? ठीक है, अब इक्विवेलेंस क्या होता है लिखो। फॉर अ सेट टू बी इक्विवेलेंट, फॉर रिलेशन टू बी इक्विवेलेंट, it should satisfy three things. For a relation to be equivalent, it should satisfy three things. All of you have understood first the answer of question number 6. A comma b क्या क्या numbers आएंगे? ठीक है,
किया, will 7,8 come? Will 7,8 come in 6? Yes or no? Hmm? No. David, will 7,8 come? Yes or no? No. Good. 7,8 will not come. Dhanya, will 7,7 come? Yes. Will minus 1,1 come? Sure. देखा, नो बोल दिया उसने. -1 and 1, they're differing by 2, no? And -1 is -2. Okay. Of 2, yes. ठीक है. So for a set to be equivalent, it is satisfy three conditions. First is reflexive, second is symmetric, third is transitive. पहला reflexive, लाइन से लिखना, कॉमा डाल के मत लिखना. पहला reflexive, उसके नीचे लिखो symmetric. तीसरा है transitive. Reflexive मतलब all elements should come, like x comma x should come. लिख लो. Reflexive मतलब for all x comma x should come. For example, in this sixth question you see, for all every element should come with its own. For example, R में पहले तो जो सेट देखो A और B में जैसे 2 है, उसमें 2 है. अरे Z में है कि नहीं 2 है, तो क्या 2,2 होना चाहिए. 2, शुड कम इन द रिलेशन. आ रहा है कि रिलेशन में 2,2, और ये सबके लिए वैलिड होना चाहिए. रिलेशन किस पर डिफाइंड है? ऑन विच सेट रिलेशन इज डिफाइंड? ऑन विच सेट? इन क्वेश्चन नंबर 6 relation is defined on which set? Integer Z. It is defined on integers. So any integer if you pick, let's say pick 7. So is 7,7 there? Ask the question. Is there? Yes, because 7 minus 7 is 0, which is even. So 2,2 there है ना भाई? I've said it is there. So is every integer coming and satisfying in the relation? Yes. 0,0 is there. 1,1 is there. Is there an integer which is left? No, all integers coming. So therefore it is reflexive. This relation is reflexive, right? This relation is reflexive. ठीक है? If it is there in the, जिस पे रिलेशन डिफाइंड है, रिलेशन किस पे डिफाइंड है? इंटीजर. तो इंटीजर में है -5, होता है तो चेक करना है. क्या हुआ भाई? -5 को -5 है कि नहीं रिलेशन में? है ना? है ना रिलेशन में? सेटिस्फाइंग, राइट? Yes, all the elements have to be x, x. ठीक है? And in symmetric and transitive, you don't have to check all elements. लेकिन रिफ्लेक्सिव पे प्रॉपर्टी है कि x, x चेक करना है. x, -x से लेना देना नहीं है. देख, x, -x is satisfying the relation, but that you don't need to check for reflexivity. Reflexivity के लिए you only have to check. Yes, there might be 5,7 भी है, x, something x है ना. रिफ्लेक्सिव को से मतलब नहीं है. रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? 5,5 भी होना चाहिए, 7,7 भी होना चाहिए. एक्स्ट्रा होगा तो चलेगा. एक्स्ट्रा कुछ एलिमेंट्स हैं, उसे रिफ्लेक्सिव को डज नॉट मैटर, बट जो उसको चाहिए वो चाहिए. आप बता आएंगे, दूसरे पे आएंगे. ठीक है? रिफ्लेक्सिव अगर यहां पे होता a माइनस बी इज इक्वल टू 1, a माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता. या फिर होता a प्लस बी इज इवन. क्या होता? a प्लस बी इज इवन, तो 1,1 तो नहीं, तब भी रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि every number when you add it to itself you will always get a multiple of 2, right? बट अगर a माइनस बी ऑड होता तो फिर तो कोई भी नहीं होता ना, क्योंकि 3,3 क्या होगा? इट्स एवरीथिंग इज इवन, राइट? अंडरस्टूड? तो कुछ भी रिफ्लेक्सिव नहीं है. दूसरा एग्जांपल देंगे तो और क्लियर हो जाएगा. रिफ्लेक्सिव अंडरस्टूड? हाँ,
वन सेकेंड, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब है if a comma b is there then b comma a should be there. If a comma b is there then its reverse should exist. If reverse is not existing then it is not symmetric. If reverse is not existing, right, then it is not symmetric. For example, in this case is 3,5 there, right? If 3,5 is there then 5,3 should be there. Understood? Is 3,4 there? No, so you don't have to check for 4,3. If the one pair is not there then you don't have to check its reverse, but if the pair is there, any x comma y is there, then you have to check for its reverse, and if its reverse does not exist then you will say this, it is not symmetric, it is not symmetric. Okay, if for some reason you can't say this statement ki dekho I found x comma y but its reverse y comma x is not there, if for some reason you can't say this statement, then you can't say it is not symmetric, it will be by default symmetric. So every relation is by default symmetric and transitive until unless you come up with the statement like symmetry ke liye you have to break the symmetry. So you can only break the symmetry. Understand this concept. You can only break the symmetry and transitivity. You can only come and break the symmetry and transitivity. By default everything is symmetric and transitive. क्या क्या? सिमेट्री देखो, सपोज ऐसे दे रखा है जैसे मान लो एम्प्टी रिलेशन है, क्या है एम्प्टी रिलेशन, लिखो एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन मतलब ऐसे बना दो, ये ऐसे बना दो, 3 डॉट इधर 3 डॉट इधर और खाली छोड़ दो, कुछ कुछ भी मिलाओ मत, कुछ भी मत मिलाना, ठीक है, कुछ भी मत मिलाना एम्प्टी रिलेशन में। क्या एम्प्टी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव, इज इट रिफ्लेक्सिव? हाँ भाई, इसमें कुछ भी कनेक्टेड है क्या? लेट्स से यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ भी 1 2 3 है। अभी रिफ्लेक्सिविटी के लिए चेक करने के लिए यू हैव टू सी दैट इफ इज 1 इन द डिफाइनिंग सेट, जिस सेट पे डिफाइंड है उसमें 1 है, यस। क्या 1 1 रिलेशन में है? नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव इज नॉट देयर। अंडरस्टूड? इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। लिखो एम्प्टी रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये बना लेना 1 2 3 1 2 3 and don't connect anything. Okay, what about symmetry? Is it symmetric? Why? I said you can only break symmetry. You can understand this statement. You can only break symmetry. To break the symmetry, you have to locate some pair and then say that its inverse does not exist. There is no pair. Can you break the symmetry? No. So therefore, by default, it is symmetric. Then you, to break the symmetry, b comma a should not be there. So to break the symmetry, a comma b should be there, and then you can say that b comma a is not there, right? Therefore it is symmetric. I have not told you what is क्या symmetric है ये भाई मेरे। देख मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मान ले तू एक आलसी इंसान है, क्या है? आलसी, क्या है तू? तो है भी आलसी। Only lazy people can tell you whether something is symmetric or not symmetric, and transitive also. Symmetric जो तीन लास्ट का दो है ना, पहला क्या है? रिफ्लेक्सिव, दूसरा क्या है? सिमेट्रिक, और तीसरा क्या है? ऑलवेज आस्क फ्रॉम अ लेजी पर्सन वेदर समथिंग इज सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, ठीक। द लेजीनेस इज इफ यू कांट see, you have to find a mismatch, you have to find a unsymmetry. Is there an unsymmetry? Unsymmetry is if one was connected to 2 and to this is an unsymmetry. This is a symmetry because 1 is connected to 2 but 2 is not connected to 1. So lazy person will by default say everything to be, अगर ये है empty तो lazy person क्या बोलेगा? Symmetric है और transitive है। समझ में आया? पहले बोल देगा वो। by default सब कुछ क्या है? बिना देखे क्वेश्चन को क्या बोल सकते हो? पहले तुम पहले अज्यूम कर लो क्या है ये, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। पहले अज्यूम कर लो, पहले अज्यूम कर लिया सिमेट्रिक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या है ये? सिमेट्रिक है। अब ढूंढो इसमें कुछ ऐसा है एरो की 1 to 2 कनेक्टेड है लेकिन 2 to 1 नहीं है। नहीं, अगर तुम ढूंढ लिए कर लिए तो बोल दो कि नॉट सिमेट्रिक।
अदरवाइज शांत बैठो। अंडरस्टूड? वन नहीं, ये सब ए टू ए में ही डिफाइंड होता है, सेम में ही डिफाइंड होता है। लेफ्ट एंड राइट सेट शुड बी सेम, ठीक है? अगर नहीं मिल रहा है तो चुप बैठो, जो सिमेट्रिक लिखा है लिखे रहने दो। अंडरस्टूड? ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा बताना, ये भी लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन लिखो कि 1 1 2 2 3 3, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? नो। नो, क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? क्या भाई, रिफ्लेक्सिव पूछ रहा हूं पहला वाला, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? रिफ्लेक्सिव है, राइट, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक क्यों? भाई फिर वही बात, it is by default it is symmetric. Can you tell me why it is not symmetric? Which one? बोलो, एक नंबर बोलो ना सर। दिस वन इज देयर बट इट्स ऑपोजिट इज नॉट देयर, बोलो। भाई मैं बोल रहा हूँ, जब सेम पे डिफाइंड होता है, लेफ्ट एंड राइट शुड बी सेम। ऐसा नहीं हो सकता 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं हो सकता। पहले इसको लिखो, दिस इज सिमेट्रिक और नॉट? इट इज सिमेट्रिक। इट इज ट्रांजिटिव एज वेल। ट्रांजिटिव बाद में बताऊंगा क्या होता है। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये भी सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सब कुछ है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ऑल है ये। एनीथिंग व्हिच इज ऑल थ्री, इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रिलेशन। एनीथिंग व्हिच इज ऑल थ्री, इट इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी को ये मत बोलना कि लेफ्ट साइड सेम एलिमेंट नहीं है, सेम ही होता है, ठीक है? 3 बार बता चुका हूं। 1 1 2 2, अब बस इतना। क्या रिफ्लेक्सिव है? हाँ, ये वाह, वेरी गुड। जाओ पढ़ो जाके रिफ्लेक्सिव फिर से। रिफ्लेक्सिव के लिए फिर से पढ़ो, पहला वाला रिफ्लेक्सिव, ऑल शुड बी देयर, ऑल शुड बी सेल्फ कनेक्टेड फॉर ऑल एक्स। भाई वही तो मतलब है, क्या है ऑल कनेक्टेड, ऑल एक्स विच आर देयर इन द सेट। इसको समझाओ थोड़ा। एक बात बता, ए में सेट इज रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए टू ए, रिलेशन डिफाइंड ऑन ए। सोचना थोड़ा, ठीक है? 3 is there in the set A, yes or no? But 3 comma 3 is not there in the relation. For reflexivity, listen to this carefully. All the elements which are there in the defined set, defining set, right, they should be in the relation. Their x comma x should be there in the relation. Okay, so this is not reflexive. Is it symmetric? अभी तो कोई नो नहीं बोल रहा। नो बोलने के लिए you have to do effort. Imagine you're a lazy person, just say symmetric. Transitive, yes. Lazy person, yes. Transitive, बताएंगे, but it is transitive. I'll explain what is transitive. सिमेट्री के लिए एफर्ट लेना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है ए टू बी है क्या, एंड देन यू हैव टू चेक कि ए टू बी का उल्टा नहीं होना चाहिए। जिसका मिला, तुमको मिला एक ए टू बी, बट उसका रिवर्स पेयर नहीं मिला, तो देन यू कैन से कम आउट ऑफ योर den एंड से इट इज नॉट सिमेट्रिक, अदरवाइज रिमेन इन योर den, शट अप। ओके, बता रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल उसी का आएगा, ठीक है? अब इसको देखो, 1 2 3 1 2 3। पहले तो रिफ्लेक्सिव करने के लिए तीनों एरो ऐसे बनाने पड़ेंगे, ठीक? और फिर मैं एक एरो बना रहा हूं। अब बताओ, अब क्या है ये? अब ये रिफ्लेक्सिव है क्या? ये इट इज, ऑल द हॉरिजॉन्टल एरोज आर देयर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, मैंने बोला एक्स्ट्रा होने दो रिफ्लेक्सिव को। रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स्ट्रा चलेगा, एटलीस्ट द हॉरिजॉन्टल एरो देयर, ठीक है? हाउ टू मेक दिस रिफ्लेक्सिव? 3 को कनेक्ट कर दो, राइट? हाँ ठीक। हाउ टू मेक दिस रिफ्लेक्सिव? इट्स ऑलरेडी रिफ्लेक्सिव, यस। व्हाट इज द डाउट?
ओ एरो मतलब मतलब ऐसे ही जा रहा है, लेफ्ट टू राइट ही है। क्या ये सिमेट्रिक है? नो, वाई क्यू सिमेट्रिक नहीं है। 1 to 2 कनेक्टेड है पर 2 to 1 कनेक्टेड नहीं है। समझ में आया? इसको लिखो, बैठो मत, लिखो इसको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, अच्छा इसके बाद। हाउ कैन यू मेक दिस सिमेट्रिक? there is one method you can connect. Write the answer. I can connect. How can you make this symmetric? By connecting 2 to 1. But there is one more method of making it symmetric. Yeah, delete the 1 to 2, right? Very good. You can delete this also. तब भी तो symmetric है ना? So write both the solutions. That either you can add 2 to 1 and make it symmetric, or delete the 1 to 2 previous arrow and make it symmetric. समझ में आया? ट्रांजिटिव मतलब होता है जो सिमेट्रिक में मेहनत की थी ना, उस पर डबल मेहनत करना है। सिमेट्रिक में क्या ढूंढते थे? A to B and then you were seeking for B to A. In transitive, you are seeking for A to B to C. So you are seeking for this A to B and B to C, and then you were checking whether A to C is there or not. So if A to B is there and B to C is there, and in spite of having these two arrows, the A to C direct arrow is not there, then it is not transitive. I'll repeat. A to B is there and B to C is there, and in spite of having these two arrows, this is important, in spite of having these two arrows, A to B and B to C, the A to C direct arrow is not there, then it is not transitive. Write this. पहले लिखो इसको. A to B is there and B to C is there, and in spite of having these two arrows, A to C direct arrow is not there, then it is not transitive. Checking transitivity मतलब नहीं, checking ये लिखना नहीं है. A to B is there, B to C is there, but A to C direct arrow is not there, then it is not transitive. In these type of diagrams, the checking A to B, checking transitivity is complex. So we have a better diagram for you, but before that I need to take an example. Let's say you go to page, which page? इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है क्या लास्ट में? ठीक है, ठीक है, एनीवे सो कोई क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं उसका आंसर पढ़ रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका आंसर मैं पढ़ रहा हूँ, आंसर भी तुम देख सकते हो बेटा, एक्सरसाइज 2D में 2 डॉग, ओके? क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसका आंसर है 1 1 2 2 3 3 2 1 1 2 3 2 2 3, ये आंसर है. You can see, check the answer of the question number 7 directly, okay? Fine. If I make an arrow kind of figure 1 2 3 1 2 3, पहला क्या है? 1 1 1 1 1 2 बोलते जाओ बेटा. 1 ए लाइन से बोलो ना भाई. 7th का आंसर ठीक है, ठीक है. 1 1 2 2 3 लो, मैं दूसरा पढ़ रहा हूँ. 1 1 2 2 3 3, फिर 2 1, फिर रुको, ओनली शी विल स्पीक, ओके? किया, हाँ बोलो. हाँ 1 2 3 2 2 3, बस यही है, ठीक. Now see, you can see, listen to carefully why I am saying something is reflexive or something is symmetric and something is transitive. This is reflexive because all horizontal arrows are there. ठीक है? Symmetric, let me check. 1 2 1 2 is there, 2 1 is there, 2 3 is there, 3 2 is there. Symmetric is, so see, the following reason is not why it is symmetric. The following is not the reason why it is symmetric.
1 2 is there but 2 1 is there and 2 1 is there. 1 2 is there and 2 1 is there. This is not the reason why it is symmetric, right? It is symmetric because I could not find a single pair where a comma b was there but b comma a was not there. Understood? ट्रांजिटिव देखो क्या होता है, 1 2 है, 2 3 है, लेकिन 1 3 नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है. यहां पे फिर भी दिख गया, बट कभी कभी नहीं दिखता. जब नहीं दिखता तो देयर इज अनदर काइंड ऑफ डायग्राम व्हिच यू ड्रॉ. व्हाट यू ड्रॉ इज, तुम सिर्फ जो एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे 1 2 3, उनको एक ऐसे बना दो कि जैसे 3 एलिमेंट तो ट्राइंगल टाइप में दिखा दिया, और 4 होंगे तो स्क्वायर में दिखा दिया, 5 होंगे तो पेंटागन में दिखा दिया. ठीक है, फिर 1 खुद से कनेक्टेड है क्या, तो 1 का सेल्फ एरो दिखा दिया. 2 खुद से कनेक्टेड है, 2 2 से कनेक्टेड है, यस में दिखा दिया. 3 3 से कनेक्टेड है, दिखा दिया. 1 2 से कनेक्टेड है क्या, समझ में आया? 2 1 से कनेक्टेड है, यस. 2 3 से कनेक्टेड है, और 3 2 से कनेक्टेड है, यस. It is easier because if you want to check reflexivity, you just check whether every element has a circular short arrow or not. Yes. If you want to check symmetry, you check if town A to town B there is a road, town B to town A there should also be a road, right? And if you want to check transitivity, check town A to town B is a road, town B to town C is a road, but there is no direct road from town A to town C. Therefore, it is not transitive. Understood? Write this. And if they are more complicated, make this kind of diagram. Whatever Sorry, it's only both sets of exact, not the exact. ये हमेशा होता ही है. Both have there to be exact for a relation to be defined. Sorry, जिसमें हम इक्विवेलेंस चेक करते हैं, इक्विवेलेंस जब चेक करते हैं पूछते हैं तो इक्वली होना चाहिए. रिलेशन तो अलग अलग भी डिफाइंड हो सकता है, बट इक्विवेलेंस जब पूछते हैं तब सेम होना चाहिए. हाँ बोलिए. दिस इज नॉट इक्विवेलेंट बिकॉज इट इज नॉट. यस. चलिए 2C और 2D अभी खत्म करना है. ठीक है, अगर तुम ऑलरेडी कर चुके हो तो मैं तुम्हें कुछ और दूंगा करने को. 15 मिनट में हो जाना चाहिए 2C एंड 2D. जस्ट राइट द आंसर्स. पेपर डिस्कस कर लेते हैं तो ठीक है.